Hello everyone, welcome to Nija Educations. Hope you all are fine. If you haven't subscribed our channel, please subscribe it and don't forget to press the bell icon for getting a new updates. Dear students, in this video we are going to learn about standard 3rd chapter number 4, that is the weather and seasons. Right? In this chapter we are going to discuss about the weather around us, different seasons in a year, and how the seasons affect our daily life. So be ready for that. Let me start. Okay, dear students, first we have to see that our earth has two moments. In previous video also, the chapter our earth, I told that our earth has two moments. Which are there? That is rotation and revolution, right? Rotation means it's moving around this एक्सिस. अपनी एक्सिस पे जो अर्थ मूवमेंट करती है टिल्टेड होके, उसको हम रोटेशंस के नाम से जानते हैं. एंड अनदर मूवमेंट इज द रेवोल्यूशन. व्हाट इज द रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन. As we all know that the sun is the center of the solar system and all the planets are moving around in their fixed path called the orbit, right? So our earth also move around the sun in their fixed path called orbit, right? So how they move around the sun, it affect the positions of earth, and it's also causes to the changing of seasons. How they affect our earth, let me see in this chapter, weather and the seasons, right? So let me start first. If we want to know about the weather, first we need to know the definition of weather. Here I told you that in simple way, if we say that what is weather, it is the conditions of the air around us. भाई वेदर को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो वेदर वो है जो हमारे आसपास की एयर की कंडीशन है, वही हमारा वेदर हुआ, राइट? सो हाउ इट इफेक्ट टू आवर डेली लाइफ, लेट वी नो अबाउट द वेदर. फर्स्ट ऑफ ऑल, विच टाइप ऑफ वेदर वी कैन सी अराउंड अस? वेदर कैन बी चेंज इन अ डे, ट्वाइस, थ्राइस टाइम, राइट? हम लोग कोई भी एक वेदर के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक वेदर है वो कंटिन्यूस रहा. सपोज़ अभी जो हमारा जुलाई मंथ चल रहा है, यहाँ पे क्या है, जस्ट इफ़ यू feel that morning it was a rainy, and after a few minutes if we see that the sun rises and their rays should be spreaded everywhere, that means weather's conditions should be changed in a day or maybe in a long time also, right? So it is not a fixed conditions of air. Whenever the condition will be changed, we can say that the today's weather is windy, warm, cloudy, calm, right? Which type of weather condition we can feel in a day or in a time periods? Let me see. We can see the warm weather, humid weather, cold weather, rainy weather, windy weather, calm weather, cloudy weather, and sunny weather, right? This type of weathers we can feel so many times. Especially we can see and feel this weather conditions in a long time, that is called climate. But now we are going to know about the weather first, right? So have you clear about that? What is the weather? Weather is the condition of air. Air की जो condition है हमारे आसपास की, वही हमारा weather कहलाएगा. Suppose if we are talking and the rain is going outside, so that means our weather is rainy. But after few minutes the rain will be a stop and the sun will be a rises. There rays around earth, that means our weather should be a sunny, right? So, and sometimes if we feel that the wind is going very fastly, that means the weather is windy, right? Okay, in coastal area wherever the sea and oceans is stopped and the land area will be started, that time if we feel that the weather will be a pleasant, it is not that much of cold, not that much of
hot. That means it should be a pleasurable or a humid also. How can we say that humid? Humid means it's a humid weather. The water vapor in the air is increasing. That time we can say that the weather is humid, right? So have you clear about that? Which type of weathers we can see around us? Windy. Windy means winds should be a blow very fast, and calm means it's not a too much windy or not that much hot, right? Then sunny weather, that means the sun rays should be spreaded everywhere and we can feel the heat, right? So that is called the sunny weather, right? And windy, cold weather, that means in winter season mostly we can feel this type of weather, right? So we feel cold around us and we wear the sweaters and all, right? So we also feel the cloudy weathers. That means clouds are, we can see on the sky, right? Now we are going to know about the seasons in our country. Okay, mainly we can see that in our country we feel main three seasons, that is summer, winter and monsoon. In summer season it is started in the month of April, right? Whenever the April month, our exam month will be started, we feel very hot, right? So that time we started our AC and our fan switch on, right? And whenever we feel that it is too much hot, our fooding and clothing should be a change over that time, right? Like in summer we want to drink cold drinks and fruits, right? So all the things affect our life. Changing of seasons affect our life also, right? So first of all, let me know about the each seasons in detail. So as I told before that our India mainly fill the three main season, that is the summer, winter and monsoon. How can we feel it? Because of the revolution of earth around the sun. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी अर्थ है वो सन के आसपास जो मूवमेंट करती है अपने फिक्स पाथ पे, जहाँ पे हमारा सन है वो टूवर्ड्स द सन जो उसका पार्ट होता है वहाँ पे समर सीजन्स फिल करते हैं. जैसे कि हमारा इंडिया वाला पार्ट एशिया कॉन्टिनेंट्स का है वो सन के सामने आता है जो टिल्टिंग वे में, तब जाके हम लोग समर सीजन्स फिल करते हैं, राइट? एंड at that time the day should be a longer and night should be a shorter because the facing of the too much light towards the sun, that is why tilted. जैसे मैंने आपको पहले ही प्रीवियस जो वीडियोस थे उसमें आपको एक्सप्लेन किया था टू रोटेशन एंड रेवोल्यूशंस मूवमेंट, सेम वे जैसे ही टिल्टेड वे में हमारी अर्थ है वो सन के टूवर्ड्स जो उसका पार्ट आता है वहाँ पे वो समर सीजन फिल करते हैं. And when the time of Earth's part toward the sun and it faces the sun rays directly on it, we can say that it is the summer season. How we feel that summer season? The sun rays should be directly on our earth or our part where we are living. That time if the sun rays is towards directly to us or our places, we feel the summer, the climate or a weather should be a very sunny or hot. We started drinking the cold drinks and we want to stay at home in a daytime, especially till the 12 o'clock to 4 o'clock, right? That time the sun is directly on our head and it should be a very hot day, right? In that time people wants to wear a cotton clothes because the cotton clothes make our skin cool, right? So this seasons affect our daily routines, fooding habits, like we are eating the cold drinks and eating fruit salads, milk item, which will make ourself cool, right? And the clothing also I told that the clothing of cotton clothes and light weighted clothes we want to wear in this seasons only, right? And people wants to go
in our India, especially in our India, we can see that the southern part of our country is a peninsula, right? And ये पेनिनसुला वाला पार्ट है तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्लाइमेट ह्यूमिड रहेगा. ह्यूमिड दैट मीन्स कि वहाँ पे नहीं बहुत कोल्ड है, नहीं बहुत हॉट है, बिकॉज ऑफ दिस सी विंग्स, राइट. जो सी से आने वाली हवा है वो थोड़ी कोल्ड रहेगी, तो उसके कारण वहाँ पे क्लाइमेट्स कंपेयर ऑफ सेंटर पार्ट ऑफ आवर कंट्री थोड़ा प्लेजेंस रहेगा. बट नॉर्थ पार्ट हमारा है वो हीट हिमालयास के कारण वहाँ पे अपर पार्ट में थोड़ी बहुत कोल्ड है, बट वहाँ पे ह्यूमिडिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ेगी. और जो इंडिया का सेंटर पार्ट है वो सबसे ज़्यादा हीट फील करेगा कौन सी सीज़न में? दिस समर सीजन्स, राइट. एंड इन दिस समर सीजन्स वी also have a vacation time, right, because of this heavy heat waves. In this summer season especially we can see this in a noon time very hot wind. Whenever it touch our skin we feel like burning, right. So this winds, hot winds are called Lu in our country, right. We all know, identify this. This is the Lu, right. Lu means a hot wind, right. Now rather than these things we can see another things in this summer season. Summer season started from the April, as I told that, and we can feel Lu also. And dust is southern India does not become hot as the north. जैसे जिस तरह नॉर्थ हॉट है, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली आई टोल्ड दैट कि साउथ इंडिया है वो इतना हॉट नहीं होता है. क्यों? कंपेयर ऑफ नॉर्थ इंडिया, बिकॉज ऑफ दिस सी एंड कोस्टल एरिया ओनली. ओके, नाउ let me know about the rainy seasons. Rainy seasons in our India we can feel a rain all around our country. The another name of rainy seasons we can know also as a monsoon seasons, right. And as we all know that the up 70% of the people in our country is dependent on the farming, and farming dependent on rain in our country mostly. Nowadays we have a lots of facility for that. Rain, without rain we can also doing the farming well, but mostly in the interior part if we see that the people are depending on the farming only, right. हमारे इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पे फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशंस के तौर पे हम देख सकते हैं, वहाँ पे रेन बहुत इम्पॉर्टेंट सीजन्स. रेनी सीजन इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट सीजन्स इन आवर कंट्री, और we are knowing it as a monsoon seasons also, right. In the seasons the farmers eagerly waiting for these seasons, as we all know that the 70% of people are depending on this season, so obviously they are waiting for the rain only, right. Now whenever the rain is too much they feel a फ्लड ऑल्सो, राइट. अगर कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं लिमिटेशन में तो अच्छा लगता है, लेकिन व्हेन इट क्रॉस देयर लिमिट दैट मीन्स टू मच रेन इफ़ वी फील दैट मीन्स इज कोजेस टू फ्लड्स. फ्लड्स मीन्स जब रेन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रिवर्स और जो वाटर बॉडीज़ है वो अपने अंदर कंटेन नहीं कर पाती ज़्यादा पानी, और वो ओवरफ्लो होके हमारे जो रीजनल्स एरियाज़ है या हमारे फार्म्स है उसमें वो पानी चला जाता है और वो हार्म करता है हमारी डेली लाइफ को और एनिमल्स और एवरीथिंग को, राइट. सो दैट मीन्स कि जब रेन हमें प्रॉपर अमाउंट्स में मिलती है, उसको जब ज़्यादा रेन होती है तो वो फ्लड का कोज बनती है, और जब बहुत कम रेन होती है तो वो कोज होती है ड्रॉट्स का. ड्रॉट मीन्स कि जब बहुत कम बारिश, जैसे स्पेशली हम देखते हैं राजस्थान के, गुजरात के कुछ पार्ट है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, और उसी सूखा को हम इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ड्रॉट. और जब पूर आ जाता है, ऐसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, तो जो पूर आने का सिलसिला होता है उसी को हम इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है फ्लड्स, राइट. सो रेन बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, फिक्स अमाउंट में होती है तो वो हैप्पीनेस लाती है, ग्रीनरी लाती है, राइट. जब रेनी सीजन्स होती है सब जगह बारिश होती है, जैसे सब ट्रीज़ और प्लांट्स ने जैसे नहा धो के नए कपड़े पहन लिए, ऐसा फील करते हैं ना हम लोग,
right? So rainy season is also important in our country. Now we are moving toward the winter seasons. How it is affect our life, let me know. Winters start is from the end of the November until to the February end, right? So ends of February, December and January is the coldest month in our country. मोस्टली हम देखते हैं कि भाई नवंबर जब फिनिश होने को आता है तब से ये विंटर सीजन स्टार्ट होता है. दैट मीन्स हमारे आफ्टर दिवाली वेकेशन, जब दिवाली से पहले हमें वेकेशंस मिलते हैं, स्टार्ट होता है हमारा वेकेशन, उस टाइम पे इतनी कोल्ड नहीं होती है, राइट? जस्ट atmosphere should be a pleasant. But whenever we come back to the Diwali vacation, we feel little bit cold, right? We started wearing the sweaters in our school and outside also. Mama, at your grandparents, if we see that your grandparents at home, they also started wearing the sweaters, mufflers, caps, right? Because this season is a cold wind season and we feel very cold that time, and we started wearing the sweaters, mufflers, jackets, all the things, right? So in this in winters, one part of the earth is turned away from the that. जैसे कि मैंने आपको बोला कि समर सीजन्स में हमारा जो पार्ट है हमारे कंट्रीज़ का वो सन को टूवर्ड्स होता है, मतलब सन के सामने होता है, तो ज़्यादा हीट फील करता है और ज़्यादा लाइट और हीट के होने के कारण डेज लॉन्ग होते हैं और हॉट होता है हमारा वेदर, राइट? सेम वे ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखें कि विंटर सीजन्स आता है तो क्या होता है, तो भाई हमारा जो पार्ट है, हमारे कंट्री वाला पार्ट है एशिया कॉन्टिनेंट्स का, वो सन से दूर होता है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है, तो हमें सन की हीट कम आती है और उस टाइम पे हम लोग जो है डेज़ होते हैं विंटर सीजन में, डेज़ होते हैं वो शॉर्टर होते हैं और नाइट शुड बी अ लॉन्गर इन विंटर सीजन, राइट? जब विंटर सीजन में ठंडी ठंडी रज़ाई में या फिर ब्लैंकेट आप ओढ़ के ऐसे सो जाते हो, सुबह कब हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता है और फिर भी आप ऐसे झाँक के देखते हो, अरे अभी तो टाइम है स्कूल जाने का, राइट? सो बट सीज़न अगर मम्मा ने आपका एसी ऑफ किया या फैन ऑफ कर दिया तो तुरंत मम्मा सोने दो ना, है ना? सो इट इज़ लाइक this only because the seasons affect our daily life, right? The sun's rays do not fall directly over the head in this season. winter seasons में जैसे मैंने आपको समर में बताया कि समर सीजन्स में डायरेक्टली हमारे हेड के ऊपर सन रेज आती है और हम ज़्यादा हीट फील करते हैं, लेकिन विंटर सीजन्स में इट शुड बी अ स्लांट, वो डायरेक्टली हम पे नहीं आती है, राइट? This result is cold days and nights. Tamil Nadu, in our Tamil Nadu, our India, if we see that the southern part of our country, we can see the state Tamil Nadu, right? The Tamil Nadu feel the rain in the seasons. How can it possible? Because of that, our northern mountains that stop the rain-bearing winds to go outside. That it will be a turnover there and give the rain in this seasons in our southern part, right? So that is why some of the part of our southern part of our country feel the rain in this winter season also, right? And the northern part feel the snowfall in the seasons. So have you clear about the summer season and winter season, and also we know about the rainy seasons. Rather than three main seasons, we also feel one more seasons in our country, that is spring seasons. How can we identify it is? We can identify easily to seeing the colorful flowers and the pleasant atmosphere in our country, right? On which time it will be held in our country. So we can see that it is a very pleasant seasons, that is spring season. It is neither very hot nor very cold in this time. February and March are the month of spring season. Which month is a spring season month? That is February and March, right? Almost we are nearby the examinations, and that time March, we all know that the seasons of which festival? All over in India we can feel the Holi. Holi is our special festival because we are playing
with color and gulal, right, in this season. So the spring season is the seasons of colors, pleasant seasons. The flowers are blooming, and if we see the earth is wearing a colorful dress like that only, right? So spring season is the very pleasant seasons in our country. A different kinds of flowers blooms which is make the earth colorful, right? People go out in picnic and enjoy the beauty of nature. Obviously whenever we see the colorful flowers in the nature, we feel a very pleasant. So that is the time for a picnic time also, right? Now we are going to know about the how seasons affect our living things or our daily life, we can say, or affect a living things. हम लोगों को ये सीजन्स के चेंज होते हैं वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं, लेट वी नो अबाउट दिस. द सीजन्स इफेक्ट आवर लिविंग in many ways. How can we say that it is affect the many ways? Let me know about that. In summer we wear a light cotton clothes. Always when we feel very hot, we want to wear a light and cotton words. We can't wear the cap and jacket, right, and sweater in that time. You feel comfortable in this sweater and jacket with the summer seasons? No, we feel very hot and we started bathing 2 or 3 times, twice time, sometimes twice, sometimes thrice time also we can want to take a bath, right, because of this very much hot, right? Okay, the another things is we wants to drink a juice and we want to eat ice creams, right? All the things we can change in the seasons by seasons. How? Because अगर आपको समर में मम्मी गरम गरम तिल की लड्डू बना के देगी तो आपको खाने का मन होगा. इट्स ओके मम्मा, थोड़ा टेस्ट करेंगे लेकिन मज़ा नहीं आएगा. बट वही तिल की लड्डू अगर मम्मा आपको विंटर सीजन्स में जब बहुत ठंडी लग रही है उस टाइम पे आके मम्मा तिल की लड्डू खिलाएगी, यू फील very nice, yummy mama, right? Because the change of seasons affect our daily life also and our taste and our body also, because that time we are started wearing this type of clothes that make our cool in summer season. When we see that the winter seasons will come, we started wearing the sweaters and mufflers and caps and all, right, jackets. So it is affect our life. And winter month we eat warm foods and like to drink tea and coffee like hot drinks, right? समर में जैसे ही आपको गोला खाना पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद है, जूस पीना पसंद है, ऐसे ही जब विंटर सीजन्स आएंगे तब आपको गरम गरम कॉफ़ी, जूस, हॉट जूसेस, सूप जिसको बोलते हैं, राइट, वो आपको पीना बहुत मज़ा आता है. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस सीजन्स ओनली, राइट, इफेक्ट ऑफ दिस सीजन्स ओनली. सीजन्स ऑल्सो इफेक्ट द प्लांट्स. ऐसा नहीं कि सीजन सिर्फ हमें ही इफ़ेक्ट करती है, वो प्लांट्स को, एनिमल्स को भी इफ़ेक्ट करते हैं. इट प्लांट सीड्स देयर लीव्स व्हेन विंटर सीजन्स इन नियर. जब विंटर सीजन्स नज़दीक आने वाली होती है तो प्लांट्स भी क्या करते हैं, अपने जो ओल्ड लीव्स है या जो काफ़ी कुछ वीक लीव्स है उसको शेड्स कर देती है, मतलब गिरा देती है. और जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होती है तो न्यू लीव्स, न्यू फ्लावर्स ब्लूजम होते हैं, राइट. सो it is affect the daily, not only the human beings, it affect the plants and animals also, right? Some plants flower only in the winter while some plants flower only in the summer. कुछ plants ऐसे होते हैं जो winter में ही grow होते हैं, right? and कुछ plants और flowers ऐसे होते हैं जो हम summer में ही देख सकते हैं, जैसे कि जैस्मीन. आपको वो गजरा लगाना अच्छा लगता है गर्ल्स को, स्पेशली जब ये फेस्टिवल्स टाइम आता है या फिर साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, गर्ल्स एंड लेडीज वांट्स टू वेयर दिस गजरा इन देयर हेयर, राइट. सो दिस फ्लावर इज स्पेशली ग्रो इन द स्पेशल सीजन्स ऑल्सो, राइट. मैंगोज एंड मेलन्स राइप इन द समर एंड एप्पल्स इन विंटर. जैसे मैंगो, अभी हमारा जैसे समर सीज़न आया तो मैंगो जूस
पूरी मैंगो जूस खाना बहुत अच्छा लगता है, राइट आपको? As we all know that the seasons change, it's change our activity also. Feel very hot, we can stay at home and we can play inside the home only. At the evening time, whenever the sun rays should be down, that time only we can go outside and play outside, right? So everything affect during this seasons time, right? And the fruits and vegetables whatever we are eating, it is also affect the seasons. How it is affect? Mango juice, if we want to eat in winter season, nowadays it is available, but it is not that much sweet like in summer seasons, right? Summer seasons में जो हम मैंगो जूस और पूरी या रोटी के साथ खाते हैं उसका मज़ा ही कुछ और होता है, राइट? बट द सेम वे एप्पल्स, चेरी जैसे फ्रूट्स होते हैं वो विंटर सीजन्स में अच्छे से ग्रो अप होते हैं और उसी टाइम पे उसको भी खाने का मज़ा और होता है, राइट? सो मोस्टली इफ़ वी सी दैट द कंडीशन ऑफ weather or a seasons affect the life, our daily life, also the things around us in this daily fooding habits, clothing, all the things affect during this changing of seasons time, right? Now animals are also influenced by the seasons. सिर्फ जैसे मैंने आपको पहले बताया, not only the human beings but also the plants and animals affect the changing of seasons, right? How it is, let me know about that. For example, frog stay underground in winter and summer. Whenever we see that the frog, that is the little animal, we can see mostly in the rainy season, whenever the rainfall will be come and the small ponds and lakes we can see, or we can see the छोटे छोटे खड्डे पानी के भर जाते हैं, उसमें हम लोग धम करके खेलने जाते हैं, तो उसी पे ड्रम ड्रम करके फ्रॉग्स बाहर आते हैं. वाई? बिकॉज मोस्टली समर एंड विंटर सीजन ही डजंट लाइक दैट मच, सो दैट इज़ वाई ही स्टे अंडरग्राउंड ओनली ऑन दैट 2 seasons. He doesn't want to face that much of cold or that much of heat, so that is why we can't see frog in that seasons more, right? Now another example, rainy seasons, okay, they cannot bear either heat or a cold. We are talking about the frog, right? Now they come out during the rainy seasons only. Snakes hide under the ground in winter. Siberian cranes and birds that live in a very cold place flies away to other warmer part of the earth in winter. As we all know that the migrate birds, right? Why they are migrating? Because of this changing of season. जैसे ही winter seasons आते हैं तो जो cold वाले part है वहाँ से जो birds है वो migrate होना start. Migrate means वो वहाँ से अपनी प्लेस चेंज करके जहाँ पे एटमॉस्फेयर कूल या वार्म है वहाँ पे मूव करना स्टार्ट करते हैं, उसको हम माइग्रेशंस के नाम से जानते हैं. और वही माइग्रेट बर्ड्स शुड बी कम दोज पार्ट वेयर इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ हॉट और कोल्ड एटमॉस्फेयर, राइट? नाउ as we all know that the plants and the animals and the human beings also affect the daily life. This is our chapter that shows that how the weather and season affect our daily life. Hope you all are understand. Goodbye, have a nice day. Thank you very much.